I welcome you all to the Digital Era Center's free class, Fluent English Communication. My name is Mrs. Rina Zafar, and I'll be your trainer for this course. I've been working here in the UK since 4 years as a proofreader, a content writer, as a trainer as well. And the same jobs I've been doing with the Digital Era Center since past year. Yeah, I've been training so many kids through this amazing platform about their communication skills, about content writing, about SEO writing. So all those skills those are my fields. So I try to just pour that same amount of knowledge that I have through my experience. I try to pour that all into my students so they could benefit from it the same way I've been working through. So what you can see in front of your screen at the moment, this is our official Digital Era Center's website. You can visit our website to see and read more about our courses, what we offer, what's inside each course. You can just scroll to our website and find out more information. If you like to know about it, you get to know about us and everything like that. Just before we move on towards the topic of the day, I would just like to make two requests that if you've got to say anything, kindly pop that in the chat box. I'll keep checking the chat box as well. And if you've got any questions, I will happily answer them all right at the end of the session, if that's okay. So yes, अगर किसी को कोई सवाल है तो chat box में डाल दें. And don't worry, अगर किसी को problem है with English language, that's all right. I'm here to help you with that. So I'll carry on in Urdu, okay? So after our website, website के बाद here you can see हमारा official Facebook group है ये. ठीक है, once आप जो है admission ले लेते हैं, you can become part of our family of Digital Era Center. तो फिर आप इस group को access ले सकते हैं. Of course, as you can see, we do so much stuff that goes on here. We do free workshops, we do giveaways. So there's so much that we do. Students work, you could see, for inspiration and support. Plus आप हम trainers के साथ भी connected रहते हैं ताकि आपको future में कोई भी मसला है, कोई बात पूछनी है, कोई client से project आया, आपको कोई guidance चाहिए, we're always there. So once you become हमारी community का हिस्सा, then हम सब और trainers हम सब वहाँ होते हैं आपको guide करने के लिए, help करने के लिए, support करने के लिए, और ये throughout your lifetime support रहता है आपके पास जब तक आप चाहें हमारी community का हिस्सा रह सकते हैं. So that's an added bonus, I would say, for everybody who becomes a part of us. So let's move on to the topic of the day. Fluent English communication. ठीक है, so मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मुझे that how important it is कि आप properly English में communicate कर सकें, especially since the start of pandemic, जितनी इसकी need बढ़ गई है. I think पहले इतनी ज़्यादा लोगों को realize नहीं हुआ था कि इतना ज़रूरी होगा. That's because people have moved towards freelancing. ठीक है, freelancing कर रहे हैं, online career बनाना चाह रहे हैं, और क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि उससे आपके दरवाजे opportunities पे खुलते हैं जिनसे आप foreign currency में earn कर सकते हैं. So क्यों नहीं? क्यों एक कोने में बैठ के रहें? ठीक है, एक कोने में एक मुल्क में कमाएं जब आप अपने ही घर से बैठ के आराम से foreign currency में earn कर सकते हैं. बट मसला यही आ जाता है कि बात सही से किस तरीके से करें, कैसे उस बंदे को सामने वाले को कायल करें, बिकॉज कोई जर्मनी से रशिया से आपसे मिलने नहीं आ सकता, या फिर कोई वहाँ से बैठ के जॉब और किस तरह देगा. सो वो आपसे बात करता है या फिर आपसे रिटन कम्युनिकेशन करता है, और यही दो एरियाज मेजर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. या तो आप रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जिनको मैं इनपुट मेथड्स कहती हूँ. These are input methods जिनसे हम पढ़ के, रीडिंग से और लिसनिंग से अंदाजा लगाते हैं कि what actually our client or customer requires from us. जब हमें ये पता चल जाता है कि उनको क्या काम चाहिए, then of course to do negotiations, to do proposals ready, और ये सारी चीज़ें
ऑफ कोर्स रिटेन फॉर्मेट के अंदर ही होती हैं, या फिर वो आपसे अक्सर लोग फ़ोन कॉल पे बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यही क्राइटेरिया है कि यहाँ यूके से भी बहुत सारे मेरे जो भी जानने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ माय फील्ड एंड स्टफ, वो भी अगर आउटसोर्सिंग करते हैं, किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं किसी भी नीश से टॉपिक से रिलेटेड, तो वो यही करते हैं कि उनसे पहले बात करके अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी नॉलेज कितनी है, उन्हें कितना पता है, और वेदर दे आर easy to communicate or not, because बातों से ही इंसान का जो है पता चलता है कि जो है वो कितना ज़्यादा capable है, or whether he's or she is capable to handle certain projects really. So I suggest what in terms of learning, what I suggest is because the natural method जो है हमारे learning का वो यही होता है, the way God has created us, कि हम सुनते सुनते सीखते हैं, the more we practice the more we learn, ठीक है, just like there's a saying that practice makes you better, ठीक है, वही चीज़ मैं जो यहाँ यूके में सिखाते हैं जिस तरीके से, वही चीज़ मैं implement वहाँ भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी अपने लिए करती हूँ, because this is the way they actually learn from it. यहाँ पे रट्टे लगाना या किसी चीज़ को ना एक्चुअली याद करना वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज बातें याद नहीं की जाती। आप भी उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं, आपको कैसे उर्दू में बात करनी आ गई? आप छोटे थे, अपने माँ बाप को जिस जबान में बात करते हुए सुनते रहते थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू पिक्ड अप ऑन दैट लैंग्वेज, आपको समझ आने लगी कि अच्छा फलां चीज़ का ये मतलब होता है या इस तरह बोलना चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश प्रैक्टिस बात करते करते और सुनते सुनते समझते समझते इसी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है, जिसको रट्टे मार के या खाली मुझे बात करते हुए सुन के आप नहीं सीख सकते। सो फॉर दैट रीजन मैं यही कहती हूँ कि हम लैंग्वेज को याद नहीं करते, हम लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं, उसे अपना बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफस्टाइल का और अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते हैं, ताकि जब आप बात करें तो वो एक जो अटक अटक के बोलना है, ऑल दोस प्रॉब्लम्स दैट वी यूजुअली फेस, नर्वसनेस, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, बिकॉज यू आर बीइंग नेचुरल, यू आर बीइंग यू, ठीक है, आप उसी तरह बात कर रहे हैं जैसे आप उर्दू में कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं, सो यू डोंट फील दैट हेजिटेशन एट ऑल, क्योंकि आप अपना लेते हैं लैंग्वेज को। सो दैट इज माई अप्रोच ऑफ टीचिंग, दिस इज हाउ आई प्रेफर टू टीच। मैं रट्टे मारवाना याद कराना की नहीं करती, और वही बात की लैंग्वेज को अडेप्ट करने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू डू प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। मेरी क्लास में मैं माइक्स सबके open करती हूँ, we do proper conversations that are more like maybe informal as well, conversations that are a bit social, and conversations that are good for your business, ठीक है, business environment में किस तरीके से बात की जाती है clients से, boss से, colleagues से, first time when you meet somebody, how you would greet them in a professional kind of scenario. So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं that we go through, we practice them all, and sometimes it becomes so much fun. Excuse me. So yeah, kids really enjoy it because it's all hands down practice. Nothing is theory based. Seriously, there's nothing that's theory based from here. Apart from that, वही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला लोगों को इस चीज़ में भी आता है कि जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, they literally fear this stage, this situation. मगर बात ये कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने पढ़ लिया, या अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपको अपने करियर के लिए जब रास्ते खोलने हैं तो पहला दरवाजा जो आ जाता है वो इंटरव्यू का ही आ जाता है, and it sometimes becomes really overwhelming experience, becomes really difficult sometimes कि how you would cope with it, ठीक है, किस तरीके से आप इंटरव्यू देंगे, because सामने वाले को कायल करना जिसको आप जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता, और आपके पास टाइम भी बहुत शॉर्ट, बहुत लिमिटेड है, probably half an hour, 45 minutes, something like that. So इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर how you will be able to convince someone, ठीक है, so हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं in depth how you would do that. सिमिलरली यही चीज़ जो मैं कह रही थी कि जिस तरीके से फ़ोन कॉल पे बात की जाती है, एक्चुअली वो आपका इंटरव्यू ही ले रहे होते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस करें, चाहे आपसे फ़ोन पे बात करें। इट इज़ लाइक अ स्मॉल इंटरव्यू जो कि क्लाइंट फ्रीलांसर में भी करता है बिफोर हैंडिंग देयर प्रेशियस प्रोजेक्ट टू यू, ठीक है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके पैसे वेस्ट हो, सामने वाला काम ही नहीं कर पाए, सो वो थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट नो यू,
so they try to get to know you. और अगर आप उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से communicate करते हैं, ठीक है, kind of keeping a balance between your friendliness, your respectfulness, your politeness, and at the same time being highly professional. So you need to find that balance between your communication. जिसकी वजह से जो है उनको पता चलता है that yes, they can actually work with you. You would be, you know, a person that they would find comfortable working with, and the person who shares the same kind of vision, the mission, the values that, you know, they want to see in their project. So यही सारी चीजें जो है मद्देनजर रखनी चाहिए in your communication. So if you've got any questions, I would happily take them. But I think I've got just for me a few more minutes if you guys want to actually attend a live practice with me of a little, we could say, an exercise I've prepared for you all. अगर कोई participate करना चाहता है, then kindly raise your hands. और अगर कोई questions हैं, तो उन्हें chat box में लिख दें. I would love to see you all, of course, in my paid group, in my paid program. So if you've got any further questions about the details of timing, you know, duration, and all those stuff, excuse me. So kindly feel free to contact उन्हीं लोगों को जिधर से आपको link मिला था. They would be, you know, delighted to help you out with that. For now, I've got this a little speaking exercise. It's called talking about personal interests. So is anybody willing to participate? Then I'll be happy to do any recorded class. Okay, Mariam, darling. Let me just clear that one thing. Look, class जो Fluent की है वो recorded नहीं होती. Why? Because जब हम बात कर रहे होते हैं, sometimes लोग अपनी personal life को share कर रहे होते हैं. You know, their personal experiences कि उनके साथ क्या हुआ, इस सिचुएशन में ये हो गया, you know, they bring their own situations कि इस तरह की हालत हो गई थी, क्या कैसे बात करें, you know, या अगर फलां चीज आ गई तो मैं किस तरह बात करूं. So they actually come up with their own situations where they need help with. क्योंकि हर एक के lifestyle में different situations आते हैं, and I love to help them with their different scenarios. So for that reason, जो इसकी classes हैं, they're never recorded because वही बात है कि किसी एक बंदे के जो है क्या कहना चाहिए, privacy violate ना हो. For that reason, I never record these so that people feel completely free. They feel, you know, really happy to chat about whatever they want, and I'm happy to really help them, assist them throughout the conversation sessions, really. Okay, so you are looking to apply for teaching. That's brilliant. Yes, again, it's useful. That's the whole point. क्योंकि communication आपकी ऐसी है कि कोई भी ज़बान सीख लें, चाहे English, French, Arabic. So ये life skills कहलाती हैं, these soft skills, और ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं. आप एक बार सीख लेते हैं, कल को आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, you know, it just becomes a part of your family. आप आगे सिखा सकते हैं. So आपको, और ये speech ऐसी चीज़ें हम हर वक्त बोलते ही रहते हैं, लिटरली हम चुप तो बैठते नहीं. सो ये जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ वर्क लाइफ में ही काम आएगा, आपके सोशल लाइफ में काम आएगा, आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें काम आएगा. सो हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसके नाम ओके डार्लिंग ज़हरा, काइंडली आप जो है these details जहाँ से आपको लिंक दिया है उनसे पूछें, because I'm sure they'll be happy to help you with all those details. Because I usually don't have any other details, so they would be delighted to share them all. अगर किसी को participate करना है तो जल्दी से raise hand करें, मुझे chat box में बताएं, मैं उनका mic unmute कर दूँगी, and we can have a quick live practice here with us. Is anyone willing to do it? Okay, कि कोई भी अपना hand raise नहीं कर रहा, looks like किसी को live participate नहीं करना, that's completely fine if you are feeling a bit hesitant. But I would suggest कि अपनी hesitancy को कहीं ना कहीं तो आपने पीछे छोड़ना है. So अभी ही क्यों ना just kill it now, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सकें. Brilliant, Mariam, I'd love to see your hand up. Okay, come join me now. आप अपना mic unmute कर लें, Mariam. Hello there. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, darling. How are you? I'm fine.
Brilliant. I want I want to tell you, in this course, you will give me the practice of writing like essays. I tell you in the chat box that I want to apply for the teaching. Yeah. So that course is useful for me. Like learning purpose, like essay writing. I think so. You will understand what I want to say. Okay, I think I do understand your question, and I think it's a very good question. Thank you for asking that. In terms of the writing area, of course, we will practice how you would write, but because essay is not communication means, do you know what I mean? हम ऐसे लिख के किसी से communication नहीं करते, but there are certain areas, you know, जिससे हम communication करते हैं, written communication होती है. Okay, understand. If you want to for the apply for job, online job, first I write to the email. So just I have the practice to write the email, then I communicate the other client. Yes, we'll practice business emails. Yes, we will. तो मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन करना था कि आप हमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे डिफरेंट मतलब प्रोजेक्ट पे के कुछ भी समथिंग डेली कुछ भी लाइक दिस. Yes, it's all assignment based. ठीक है, so of course आपके काम में कुछ चेक करेंगे. हम verbal और written दोनों communications practice करेंगे. There are certain areas, of course, just like business emails and other communication चीजें जिसमें you know you tell about yourself and try to communicate with other people. But in terms of essay and other writing elements, they are included in my content writing course solely because essay is not a means of communication. But yeah, there are like emails and other things that are included in written practice. Yeah, we will work through them. Yes, we will. You are just focused on spoken method. No, dear. We will do written as well. Don't worry, हम written भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि just written, spoken. हाँ. और मुझे एक और बात डिस्कस करनी. ठीक है. Okay. Yes, तैयबा. जी प्लीज. मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी कि जैसे कि हम अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई है. हाँ, आप हमें सेंटेंसेस वगैरह भी कुछ करवाएंगे कि नहीं? Sentences. आप ऐसे राइटिंग. Yes, to make the sentence. Sentences, because yes, हम practice करेंगे. I'm gonna give you, but मेरी teaching में sentences सिखाऊंगी. Yes, I will. But my teaching method, as I've said, वैसा नहीं होगा जैसे you know बचपन में copy pencil में sentences सिखाते थे. हाँ, वो रटे वाले नहीं. मतलब डेली रूटीन में कि आज हमने एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है with spoken. Yes, there are different exercises, not just one, different types of exercises. ठीक है, जो हम throughout the course we'll practice them live. You will be talking just like now. You know, I'll be there every single time talking to you. There will be your like group mates as well. जिनके साथ, you know, you can interact with them. Okay. Different perspectives. Yeah. अब मुझे आप हमें रीडिंग के लिए भी कुछ देंगे डेली, जैसे कि आप हमें मतलब फॉर एग्जांपल कुछ निकाल दिया कि यू जस्ट रीड दिस ईमेल या प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें होती हैं आप उनकी हमें रीडिंग के लिए भी बोलेंगे कि बस नहीं? Yes, as I've said, you know, the all for example अभी जैसे आ रहा है स्पीकिंग एक्सरसाइज, आप हमें ये बोलेंगे कि एक को बोल के आप इसको रीड करो, जहाँ पे हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी आप उसको हमें ठीक करवाएंगे. ये मैं पूछना चाह रही हूँ. Yes, that's what I will will जो work लिखा हुआ है with you. स्क्रीन, हाँ जैसे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप ये बोलेंगे कि इसको रीड करो. Yes, और मैं भी आपको करेक्ट भी करूँगी डालेंगे because it's called screen, not screen. So इसी तरीके से मैं आपको करेक्ट करती जाऊंगी throughout your conversation. जहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज दिखेगी, ऐसी बात जहाँ मुझे लगता है इस एरिया में आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, so I will not hesitate to tell you. और मैं आपको भी यही कहूँगी कि you know strong अपना mindset लेके आया that you want to learn, you want to put your input. आप अगर अपना जो है 50 भी डालेंगी,
Exactly. मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चनिंग कर रही हूँ जो मेरे माइंड में है कि Yeah, आप हमें no रीडिंग भी problem at करवाएंगे, all. राइटिंग भी करवाएंगी, हाँ, Yes, all these और areas. सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस आप भी हमें बताएंगे, Yes, we are going how to to make work the through. sentence. Yeah, we're going to work through your listening. We're going to work through your अच्छा, what reading. the duration of this course? ये details I would ask you कि जो है उनसे पूछने जिधर से आपने link लिया, because they've got all the details and they'll happily provide you those. Okay. ठीक है, so that I can of course ठीक है, answer other people's questions as well. Thank you. Thank you for your questions. जी, thank you Allah. No problem at all. Okay, yes, Tahiba, as you asked me कि ये course में content writing में help करेगा कि नहीं. As I've said earlier कि कोई भी field हो, आपने बात तो करनी ही होती है, ठीक है? किसी को कॉल करना होता है, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी से ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है? फ्रेंड्स गैदरिंग है, शादियां हैं, एनीथिंग लाइक दैट, सोशल गैदरिंग्स हैं, मे बी सोशल मीडिया पे आप किसी से बात कर रहे हैं और कुछ पोस्ट कर रहे हैं, मे बी आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, मे बी आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, ठीक है? सो भी आपको अपने डिजाइन को प्रेजेंट करना होता है. सो बात तो हमें हर जगह करनी है, बिकॉज दैट्स द थिंग, हम इंसान है, हम कोई बुत नहीं है, यू नो स्टैट्यूज के हम चुप करके बैठे हैं. So yes, it's going to help you in every single way, in every area and every aspect of your life. और ये मैं वही कह रही हूँ, इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल कि एक बार अगर आपकी कमांड आ जाए इसके ऊपर, then it's going to help you throughout your lifetime. आप just like I said, जिनके बच्चे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के साथ घर में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं. आपके भाई बहन साथ में हो, आप उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं. So it helps improve you and people around you as well. So it's that kind of a skill that's not going to just go away or just जब आप काम करने बैठे हैं सिर्फ तभी यूज करें. You could just literally use it throughout your life whenever you want, whenever you feel like. Yes, I understand that because it is a big hurdle. Communication is a big hurdle. जो भी जाना चाहते हैं towards freelancing, we do find it like कि अब क्या करें, कैसे बोलें, that kind of a thing कि हम किस तरीके से communicate करेंगे अपने clients के साथ on written basis as well as their speech. Okay, so we are going to practice both, and as I said, we practice all these 4 areas. There are so many exercises that we have. Me personally, I have planned for my students. These exercises will definitely help you towards your, combative communication. I still get students, who made previous students there, and when I speak to them, it's just, a moment of delight to see the level of their confidence and the way they just communicate. Whereas the first शुरू में आते हैं, they're a bit hesitant, कोई बोल नहीं आता, I have to really encourage them to speak up and stuff like that. But after that, जब आते हैं, they're like, hello, mate, how you been doing and stuff like that. And I'm like, oh, wow, it's just really lovely to even hear your voice and hear the confidence in levels in your voice. So it just empowers you as well. You feel confident in your own. So yeah, it's going to help you in so many areas of your life. And inshallah, I would love to see you all in my paid programs. And if you've got no more questions, then I would like to end this session here. But yes, I am conducting the next session as well. If you are interested in content writing or SEO writing, so yeah, feel free to join the next session as well, because that's also completely free to join. So I'll see you all in the next one. Take care. Allah Hafiz.